Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Viewers, you are watching Bisaat. I am Shakeel and Ramay. We are living in a very interesting time, a time when a global power, a global superpower is on a decline, the USA, while simultaneously a new superpower is emerging, China. Rather, China has already emerged as a new global power. But the most interesting part of these times is that a fallen superpower is resurging. This is very unique in history. Any fallen superpower which never researched in such a quick time, in such a short time, that is a very interesting case study. It also shows that how that this rise in the resurging power would be strong and has the resilience, I mean Russia. In this context, realignment is happening. New friends are becoming and the old friends are dumping each other. New alliances are emerging, like not alliances by partnerships like Shanghai Cooperation Organization, and old alliances are under threat like the NATO. In this context, as I mentioned already, so every country, they are realigning their positions and they are trying to readjust and adjust their positions according to the new reality. On top of that, the most recent event is attack on Iran. That has further accelerated the whole dynamics. And it is fear know that, so the proxies which were used against the Pakistan from Afghanistan, from other parts, they will also play a role here. In this context, we have designed this program, especially we will be in this program we will be talking about Prime Minister Shehbaz Sharif's visit to Russia and what would be of impact of this visit in the long run, and how it will impact our the foreign policy, security and economic linkages in the coming years. In this context, we have invited two very important guests. One, Dr. Andrei Kartonov. He is the Director General, Russian International Affairs Council, Moscow. And we also have with us Lieutenant General Ghulam Mustafa Saab. He is a retired general, but he has a very keen interest and understanding of the global issues, what is happening around the world. So in this context, we will be discussing with them these all questions which I gave in my intro. We will start with the Dr. Andrei Kartonov. You are in a Moscow. Dr. Andrei, you are in a Moscow. What do you expect from this upcoming visit of Prime Minister Shehbaz Sharif? What will be discussed during this visit? Well, first of all, let me say that in my view, Pakistan remains a kind of underinvested asset for the Russian Federation, because for many years, since the Soviet times, in Moscow they looked at Pakistan primarily through the Indian lens. And of course that created certain restrictions on what Russia could and could not do in terms of bilateral relations. However, the situation is changing right now. Pakistan is growing, its importance is increasing, both in terms of regional affairs, but also in terms of its global standing. So I think that in Moscow, they will discuss at least two, maybe three basic issues. First of all, the security environment, and indeed you mentioned Iran. I think it is a matter of concern to both Moscow and Islamabad. The recent developments in Afghanistan are also a matter of serious concerns. Afghanistan is also very important because 2 or 3 days back I was just looking at the foreign minister of Russia. He was also talking about some involvement of terrorist attack in Russia. Exactly, exactly. Again, I think that all neighboring countries are interested in maintaining stability and predictability in Afghanistan, but Afghanistan remains very fragile. I think that definitely the country encounters many problems, so we cannot take this stability for granted. So that's the first block of questions. The second block is about economic relations between Russia and Pakistan. Pakistan is a country with a rapidly growing population. It is potentially an interesting market for the Russian Federation. And also, if you take some of the multilateral projects that they consider in Moscow, some of them cannot be implemented without Pakistani involvement. If you, for instance, talk about this new transportation corridor from the north to the south. And that is very important corridor.
There are also And the of course, linkages with the BRI. Right, exactly. So I think that the economic dimension remains also quite important. And finally, I hope that they will discuss also the human dimension of this relationship, because again, we do not know each other. We usually uh, 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 get information on what goes on in Pakistan through third sources, mostly through Western media. This is not good enough. I think that we need to have a more People-to-people human exchanges. interaction. Yeah, it involves, also, promoting tourism, educational exchanges, cultural exchanges, things like that. I will come back I to think the you. agenda. I will come back to Dr. Yeah. Andrew. I will move to that Lieutenant General Ghulam Uswasa. जनरल साहब, आपने भी डॉक्टर एंड्रू की तरफ सुन रहे थे, ये उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी है कि जो पास्ट में जो रशिया है पाकिस्तान को इंडिया के लेंस के थ्रू देखता था, अब यानी कि वो चीज़ें चेंज हुई हैं. तो इस कंटेक्स्ट में सर आप क्या देखते हैं कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं रशिया, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें चीज़ें हैं कि जो मेजर डिस्कशन का हिस्सा बनेंगी? My greetings to our friend from Moscow. Let me also confess that in Pakistan, we also looked at Russia and Soviet Union, its predecessor, from the Western viewpoint. And our concept of Russia and Russians was pretty cockeyed, frankly. बहुत ही हमारा मजाक का खेल हमारी सोच थी रूस और रूसियों के बारे में. और ये मेरे लिए एक बड़ा हैरान कौन तजुर्बा का था. It was a very, very pleasant experience for me when I visited Russia way back in 2004. Okay. Highly emancipated, very highly educated, very well aware of history and the environments. Like in the region, Russians, I think, probably were leading. Leading in the medical sciences, leading in their sciences. They are very, इनकी जो साइंटिफिक नॉलेज बेस है रशिया की, तो उसमें तो सर ये सानी नहीं रखते. यही मैं कह रहा हूँ कि हमें इसके बारे में पता नहीं था. हम तो उनके बारे में जो हमारी सोच थी, our view of Russia was what the West told us. But that is one thing. Fall of Soviet Union, I recall, मुझे याद है अभी वो एक इदारिया लिखा था Washington Post ने, editorial, that now that we have defeated Soviet Union, what next? And Islam. बिल्कुल. उनका ख्याल ये था कि अब रशिया खत्म हो जाएगा, लेकिन रशिया की एक कंपल्शन है. The compulsion the Russians have is that they have either to be a superpower or they will absolutely vanish. Determination है, उनका एक विजन है. Vision है, and that is history, that is geography. Or that is the reason, if you recall, first in Georgia and then later in Ukraine, the entire West got together to get Russians involved and probably defeated, get into a long-drawn war. सारा कुछ ये तो खैर एक तारीख का हिस्सा है. बिल्कुल बिल्कुल. मगर सर आप क्या देखते हैं, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं ना, मॉस्को जा रहे हैं. ऐसी बात कर रहा हूँ, अब उस तरह मैं आ रहा हूँ कि हमारे उनसे ताल्लुकात क्यों हैं. जरूरी इसलिए हैं कि जब आप ईरान को देखते हैं, अफगानिस्तान को देखते हैं, तो ईरान पर जो हमला है, जो ईरान को तबाह करने की, ईरान पे सिर्फ न्यूक्लियर पावर की वजह से हमला नहीं कर रहे, वो ईरान को तबाह करना चाहते हैं. बिल्कुल. ईरान रूस की एक किस्म की सॉफ्ट अंडरबेली है. अफगानिस्तान में वो लगातार एक तबाह कुन सूरत हाल इसलिए रखना चाहते हैं. If Afghanistan shuts down, the trade and the contact between people from this region with Russia and other Central Asian states बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. बिल्कुल. और इसके साथ ही आप देखिएगा कि अगर खुदा न खास्ता ईरान को कुछ नुकसान पहुंचता है, जैसे कि मगरबी दुनिया लगी हुई है पीछे और आज भी हमला हो रहा है इसके ऊपर, तो सदर पुतिन ने मेरे ख्याल 2015 में प्रेसिडेंट पुतिन compromised and sacrificed Russian interest and got an agreement signed on the Caspian Sea resources. These resources are second only to Saudi Arabia. And if they are allowed to be exploited, and the way to exploit them is to send them out via Pakistan or Iran and other countries.
and that is where Pakistan again can be of great use. तो ये मैं बात से कह रहा हूँ कि ईरान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमले की वजूहात में रशिया भी एक वजह है, बहुत बड़ी शामिल है, इसमें शामिल है। बिल्कुल, वो रशिया को अंडरमाइन करना चाहते हैं। ये अंडरमाइन, अब पाकिस्तान का रशिया के साथ ताल्लुकात की बेहतरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिक रियल में बहुत ज्यादा जरूरी है। Thank you. Sir, I will come back to you. No, I am again going to Dr. Andrew. So we have to talk about, if you look at the economic situation, we have seen since 2000 onward, so Russia has grown exceptionally. In 2000, the Russian GDP was only 260 billion US dollar. Right now, it's 2.54 trillion dollar. So trade has been increased, their manufacturing base is increasing. In this context, Dr. Andrew, how Pakistan and Russia can work together, where Russia can also create some economic opportunities for the Pakistani business community? Well, I think that definitely there is a lot of untapped potential in industrial cooperation, but also in meeting common economic challenges. Both Russia and Pakistan go through, for example, through the energy transition, and Russia might be helpful for Pakistan in terms of looking for alternative sources of energy. Definitely the infrastructure is one of the bottlenecks in Pakistan today, and again, Russia might be of assistance in terms of transportation and logistical chains development in country. I think that there are many innovative energy cooperation is also can be here. That's right, but also cooperation in space. I think that this is something that we should not forget as a potential avenue for. So will Russia will be willing to include Pakistan in Russian space programs? Well, I think that this is something that can definitely, probably that will be discussed during this visit. There is a mutual interest for working together and to make sure that neither side is dependent on Western countries in this important domain. Definitely, there are other areas. For example, we can work in the field of agriculture. I think that there is a capacity there. And on the other hand, I think that Russia has to explore the opportunities for involvement the Pakistani businesses in trading with Russian companies. Just for your information, according to initial information, a delegation of 9 business groups will also be accompanying the Prime Minister, and they will be participating in a business forum, Russia-Pakistan Business Forum in the Moscow. So what do you see? So can it help to bridge our business people? Well, I think that, course, business people are cautious. They don't want to take too many risks. I think on both sides, and sometimes they lack adequate information about opportunities that might see in the other country. But gradually, I think it will grow, and I think that it will also go beyond the two capitals, because Russia and Pakistan are relatively big countries. They have regional business associations and small businesses that have to be engaged in this interaction. I think that definitely we should try to promote more tourism. And again, I think that for the time being... There is the point I will come back to on that point, the engagement of the youth. But I will go to the Lieutenant General Mustafa Saab. Mustafa Saab, जब हम देखते हैं अपना पास्ट, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप देखते हैं रशिया के साथ, तो हमें पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है, वो एक बहुत बड़ा वेंचर नज़र आता है कि जिसने हमारी एक यानी कि जो स्टील इंडस्ट्री का एक पूरा शेप चेंज कर दी थी। अभी भी बात हो रही है, जब डॉक्यूमेंट्स दे रहा है कि शायद अभी प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर बात करेंगे जाके इसके रिवाइवल के लिए, और इसके साथ साथ जो गैस पाइपलाइन की बात हो रही है। सर, इस कंटेक्स्ट में हम क्या रशिया के साथ किन फील्ड्स में भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप कर सकते हैं बिल्ड? ये जो बहुत बड़ा इशू है रशिया के साथ पाकिस्तान का, वो ये है कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत कमजोर है रशिया में। कॉन्सिक्वेंटली जो ट्रांजैक्शंस हैं आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उसमें बहुत ज्यादा लोग घबराते हैं। मैं खुद
میرے ایک دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, وہ رشیا میں ہے, بزنس مین, ویری بگ بزنس مین دیر. یہاں پر بھی ہمارے دوست ہیں, جن سے میری بات چیت ہوئی ہے. تو مسئلہ ان کا صرف یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے یہ بہت کمزور ہے, نمبر ایک. نمبر دو, ہماری جو اورینٹیشن رہی ہے نا پاکستان کی, اور ابھی تو سر یہ دوسرا جو ہوا ہے کہ جب سینکشنز ہوئی ہیں اس کے بعد تو ویسے ہی ویسٹ نے یعنی کہ رشیا کو بینکنگ سیکٹر سے آؤٹ کر دیا, جب پیمنٹ سیکٹر سے. جی, تو یہ ایک اور مسئلہ ہے پاکستان کا. پھر جب سے پاکستان معاذ وجود میں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہم ہمیشہ مغرب کی طرف دیکھتے رہے ہیں, تعلیم کے لیے بھی, سب کچھ کے لیے بھی. حالانکہ ہمیں بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جو رشیا میں تعلیم, لینگویج ڈفرینٹ ہے, یس آف کورس جو مسئلہ ہے ان کا وہاں پہ, تو لینگویج ہم انگریزی بھی سیکھ رہے ہیں. بالکل. تو رشیا میں لٹریچر ہے, لینگویج ہے, ان کی جو سائنس ہے, اور وہاں پر جو ہمیں تعلیم مل سکتی ہے, جو پاکستان کے ایڈوانسمنٹ میں, جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مغرب کے بجائے تھوڑا مشرق کی طرف بھی دیکھنا شروع کریں, اور پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, وہ جائیں وہاں پہ ان کو تعلیم دیں, لینگویجز سیکھیں. یہاں پر ہمیں لینگویج سکھانی چاہیے, کیونکہ یہ بیریئر نہیں ہونا چاہیے. رشیا میں پہلے تھا مسئلہ, لیکن رشیا میں آہستہ آہستہ لوگ انگریزی سیکھ رہے ہیں. ہم بھی تھوڑا بہت اگر اس میں سوچ رکھ لیں تو پھر آپ کا جو یہ ساری جو بات چیت ہے یہ بہت آسان ہو جاتی ہے. سر یہ لینگویج کے معاملے میں تو ہمارا چائنا کے ساتھ اتنا کلوز کوآپریشن ہے, ہر فیلڈ میں ہم اس لینگویج میں بھی ابھی پرابلم اس کو سیکھ رہے ہیں. ایسا کمنگ بیک کہ جو ہماری اکانومی ہے, اکانومی دیکھیں, ہم اسٹیل ملز کی بات کی, آپ کیا دیکھتے ہیں کون سے بڑے پروجیکٹس ہیں, اسمال پروجیکٹس ہیں ہم جس میں یعنی کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہم کوآپریشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اسٹیل میں رشیا بہت ایڈوانس تھا, اب بھی ایڈوانسڈ ہے, اور ہمیں اب بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. میرا خیال ہے بجائز کے جو پرانی اسٹیل مل ہے وہ بیڑا غرق کر چکے ہیں ہم اس کا, اسے نہیں لگائیں, اور جو ماڈرن جو اسٹیل جو ٹیکنالوجی ہے رشیا کے پاس ہے اس کو استعمال کریں. پھر سب سے بڑی جو ہماری ویکنس ہے وہ اگر آپ دیکھیے تو جو ہماری ٹرانسمیشن لائن سسٹمز ہیں بجلی کا, وہ بہت کمزور ہے ہمارا. وی کین پروڈیوس about 52,000 میگا واٹس الیکٹریسٹی, لیکن آپ اپنی ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے مختلف علاقوں میں. ہاف کر سکتے ہیں ابھی, اور وہی اگر آپ پاکستان پورے وہ پھیلاتے ہیں آپ اس کو, تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پھر جو سینکشن لگی ہوئی ہیں, ہمیں ان سینکشن سے باہر نکلنے کے لیے خود راستہ بنانا پڑے گا. امریکہ بہادر کے منو میں محنت نہیں رہ سکتے ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. ہم باہر نکلیں گے تو رشیا سے انرجی بھی ہمیں ملے گی, گیس بھی ملے گی. obviously جو ان کا فیول ہے اٹس آن دی ہیویئر سائڈ, ہمیں ری پروسیسنگ پلانٹس جو ہمارے ہیں ان کو تھوڑا ہمیں ریفائن کرنا پڑے گا, لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں, وہ کر سکتے ہیں ہم. وی گیٹ چیپر انرجی, چیپر صاحب. اور ایگریکلچر میں انہوں نے بات کی, ایگریکلچر میں بہت زیادہ ہمارے چانس. سر یہاں پر ایک سوال ہے, جو سینکشنز کی ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں ہمارا بھی چائنا کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہے, رشیا کا بھی بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. چائنا اور پاکستان اور رشیا تینوں ایس سی او کے ممبر ہیں. کیا ہم کہیں ایسا نہیں ہے تھرڈ کنٹری ارینجمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر چائنیز مارکیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں؟ اوبیسلی یہ کسی حد تک جو میری طرح آتا ہو بھی رہا ہے, وہ ہے چائنا پاکستان رشیا سے بات چیت کر رہا ہے, اور چائنا کے تھرو, چائنیز کرنسی کے تھرو بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ چائنا رشیا کا ٹریڈ بہت زیادہ ہے. پرٹیکولرلی جو آئل ہے, بہت زیادہ آئل فیول جو ہے وہ رشیا سے چائنا کو جا رہا ہے. گیس بھی آتا ہے, یعنی کہ آئل بھی آتا ہے. اس لیے اور یہ ضروری ہے. دیکھیے ہم سوچ ہماری جو ہے نا, ہمیں گڑے وہ کنویں میں بند ہیں ہم لوگ, اور ہم امریکہ کے سامنے جا کے گھٹنا ٹیک دیتے ہیں. امریکہ اس وقت ڈلتی ہوئی طاقت ہے. اب موقع پاکستان ڈالتی ہوئی طاقت نہ بھی ہو, ہمیں جو صحیح بات ہے ہمارے مفاد میں وہ کرنا چاہیے. بھائی دیکھ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بار بار ہم کیوں, ہمارے پرائم منسٹر جا رہے ہیں ابھی, ہاں جی, اچھا ہے کہ یہ امریکہ سے ہو کے آئے ہیں تو رشیا جا رہے ہیں, مجھے اس بات پہ خوشی ہے اس بات کی. بالکل, لیکن وہاں جا کر انہیں ایک بولڈ فیصلہ کرنا پڑے گا ان کو, بالکل, کہ کیا یہ جو سینکشن جو ہیں, کیا ہم انہی کے نیچے دبے رہ کے پاکستان کو اسی طریقے سے نقصان پہنچتا دیکھتے رہیں گے, کیا ہم اسے باہر نکل سکتے ہیں؟ نہیں سر, یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ کیا. ابھی سینکشنز پہ میں ابھی یعنی کہ اینڈریو سے بھی, ڈاکٹر اینڈریو سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اینڈریو, if we look at this, General Saab was talking about the major hurdle at this part of time in the sanctions on Russia, although he is saying we should do and we should
definitely look for alternatives and the ways where we can work together despite of all these sanctions. He proposed the China channel, or as you also were talking about. Well, how do you see so Pakistan and Russia can work together in the context of this whole sanction dilemma? Well, I think, first of all, it's important to shift the bilateral trade from dollars to national currencies to avoid dependence on the Western financial system. And this process is already underway. If you look at the current structure of the Russia-Pakistani trade, you'll see that more than 2/3 of this trade is already denominated in national currencies rather than in dollars. Another important factor that might accelerate cooperation is working together in multilateral platforms, like SCO, for example, that would allow to create a multilateral mechanism to promote not only trade but also investment cooperation in technologies and in setting new standards for example, IT or for new technologies in biomedicine and areas like AI is everything. Yeah, and indeed, since we are moving to yet another technological revolution, it's important to be not in the end of the transition, but in the beginning. Working together, we can definitely help each other in moving in this direction. So I think that also, Russia and Pakistan can work together in many multilateral, international universal organizations like the United Nations, for example, to oppose unilateral sanctions and to stand for equal rights and norms within the international trade. I think what you are talking about, multilateral setting. So in this, this is an additional question. So Pakistan also wants to join the BRICS. So how the Russia look at that membership to the BRICS? Because Pakistan right now is facing some challenges from some of our friends. Well, I think that this move will be welcomed by Moscow. Because if you look at the current dynamics of the BRICS group, you'll see that it has become much more diverse than it used to be. And we have various countries there with very different political systems, different stages in their economic development. Pakistan would definitely make the BRICS grouping stronger. Yes. I can imagine that some current members of BRICS might have reservations about Pakistan, but I hope that these reservations will not prevent the country from joining the group. I think that is a major problem right now for the Pakistan, for the BRICS, because those observations, the reservations are coming from the Western ally. So they are just towing their policies. तो यहाँ पे एक वक्त हुआ है कि मुख्तसर सी ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. तो हम डिस्कशन कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. अभी डॉक्टर एंड्रयू जो बात कर रहे थे कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करना चाहिए, कि जैसे SCO है तो पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, और मैं तो ख्याल का ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि SCO ने काफ़ी रोल प्ले किया है रशिया के साथ हमारे लिंक को दोबारा रिवाइव करने में. चाइना ने भी इस प्लेटफॉर्म को भी यूज़ किया. आप क्या समझते हैं कॉपरेशन किस तरह का होना चाहिए इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे? देखिए, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा जो आपको फायदा है शंघाई कोऑपरेशन का, इनका ये है कि ये मशरिक बेस्ड हैं और जो ताकत का तवाज़ुन है वो आहिस्ता आहिस्ता मशरिक की तरफ टिल्ट हो रहा है. बिल्कुल. और हम उस टिल्ट में बजाय आखिर में आके शामिल हों, जब लुढ़कते हुए हम आएंगे कोई हमें पूछेगा नहीं. पाकिस्तान उसमें एक डायनामिक और मुतारिक किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान को. बिल्कुल. और पाकिस्तान उस पोजीशन में है. इसी के साथ पाकिस्तान और रूस के लिए भी खतरा उतना ही कॉमन इतना पाकिस्तान के लिए है.
और जो रूस के जो साबका सोवियत यूनियन की रियासतें हैं, वस्ती एशियाई रियासतें जो हैं नीचे, उनके मसाइल भी हैं। अगर हम सब मिलकर रीजनल अप्रोच लें, चाहे तो अफगानिस्तान को संभाला जा सकता है और हम ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ईरान को भी सपोर्ट चाहिए और ईरान को सपोर्ट चाहिए ईरान के लिए भी और रशिया के लिए भी, मेरे लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल सर, इस पे अभी बात करते हैं हम ईरान पे। जस्ट इसका यानी कि इसको सेशन को हम कंक्लूड कर रहे हैं, अभी लास्ट सेशन पे जा रहे हैं। तो सर, इसमें जो पाकिस्तान जो ट्रेड का है यानी कि इकोनॉमिक लिंकेजेस SCO पे, तो क्या पाकिस्तान को अभी यहाँ पर पाकिस्तान में जो SCO के साथ अपनी इंगेजमेंट है उसको किस हद तक लेके जाना चाहिए? कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शंस और हैं कोई? हमें इसी का सोचे ना, बिल्कुल हम किस कदर ट्रेड बढ़ा सकते हैं। रशिया की आबादी भी तकरीबन 25 से 30 करोड़ आबादी है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत रिसोर्सेज हैं, 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उनकी बेस बहुत बड़ी इकोनॉमी की, उसमें बिल्कुल एग्रीकल्चर में बहुत आगे हैं वो, इंडस्ट्री में बहुत आगे हैं वो। बिल्कुल हम उनसे फायदा उठाएं बजाय मगरब की तरफ देखने के। हम उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? हम लोग उनके साथ मिलकर हम काम क्यों नहीं करते? और ये जिनकी आप रीजन को सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे एक दो चीजें बताएं जिसपे हमें इमीडिएटली इनके साथ काम शुरू करना चाहिए। एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एग्रीकल्चर जो जितनी पेस्टिसाइड है उसमें, और आपकी जो इंडस्ट्री है और स्टील इंडस्ट्री, इसमें इमीडिएट काम करना चाहिए। ठीक है सर, कमिंग बैक टू यू अगेन, डॉक्टर एंड्रयू, you are talking about linkages. I just want a short comment from you, because after that I also want to talk about the regional context where the Iran has been attacked by the USA and the Israel. I also want to talk about that. So can you suggest some innovative ways to engage the youth, especially for the education exchanges or the university engagement for promoting these education exchanges? Because investment on youth is a long-term investment. They have to take it to the next 4, 5, 6 decades. Absolutely, I agree with you completely. I think that investment in the younger generation is critical for the sustainability and stability of the relationship. And people who engage in some joint educational projects usually keep these contacts throughout their professional lives, and they know the culture, including the business culture of the other side, and they are not constrained in their views on the other countries. So I think that even if we take universities, there are so many opportunities in joint courses, in dual degree programs, in research projects, in various areas of hard sciences, engineering, and social sciences. And scientific knowledge. Scientific knowledge. I always admire the strong base of Russians on the scientific knowledge. Although they have very big names in the literature like Tolstoy and other, but their scientific base is something we have to discuss. Now we have to quickly shift to the other issue, which is you know that, so that Israel and USA, they have attacked Iran. So how Moscow is looking at that attack? Well, it's clear that Moscow condemns this attack by Israel and the United States. This attack makes any new diplomatic steps much more difficult right now. And as you can see, this conflict might easily escalate to neighboring countries, including many countries in the Gulf. It will affect. It has already started. So Iran have replied and hit the different bases in the Gulf countries. Yeah, we'll see. We'll see the outcomes. It's too early to make final conclusions, but definitely, if there are significant casualties in U.S. military bases in this part of the world, that would have very serious political consequences for Donald Trump and for his administration. So it's something that the United States will have to pay a price for. But if the United States continue, as it seems like, because under the pressure from the Israel, United States is doing what Israel wants from the USA. So where the Moscow will be standing? Will Moscow go for the assistance to the Iran and then the protection of their rights?
Well, I think that there are certain ways in which Moscow can assist the Islamic Republic of Iran. The most evident and the fastest is the diplomatic activities to raise this issue in the United Nations Security Council. Of course, the United States is likely to veto any resolution of the Security Council which would try to stop Israel and the Trump administration. But nevertheless, I think it's important to alert the international public about what is going on, because I can suspect that the Iran might face the danger of a direct large-scale humanitarian catastrophe if the strikes continue. Iran is a rather difficult situation already in terms of its economic positions, and definitely Russia is not interested in any further destabilization of the political situation inside the Islamic Republic. Yeah, I think these would be what you are talking about. These are very substantial measures. So, General Sahab, अगर यही बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो ईरान पे अटैक हुआ है, एक तो आपने डॉक्टर एंड्रू की बात को सुना, आप क्या समझते हैं इसके हमारे रीजन पे क्या इम्पैक्ट्स होंगे, स्पेशली पाकिस्तान पे? देखिए, पाकिस्तान पे तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है ना। ईरान पे हमला हो क्यों रहा है ये? अगर आप फर्ज कर लें, जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उनको हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, अगर उनको न्यूक्लियर पावर ना बनने, उनसे रोकने सर, वैसे बड़ी मजाका खेज बात है। इमाम खमीनी ने फतवा दिया हुआ है कि हमने नहीं बनाना, वो कहते तुम बना रहे हो, वो कहते हम करते नहीं, वो कहते तुम कर रहे हो। तो दूसरा, अगर वो उनको बनाने से रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी है उसके साथ क्या करेंगे ये लोग? हाँ, ये बड़ा अहम बात है सर, ये बहुत कम डिस्कशन में आ रहा है। हम समझते हैं कि ट्रम्प हमारा दोस्त है, अस्तगफुरुल्लाह, हमें पता नहीं हम कहाँ रहते हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, ट्रम्प इजराइल कभी पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, ये हमें ये शक इसमें रहना चाहिए नहीं है। और ये ईरान को खुदा न खास्ता कुछ हुआ, इफ ईरान फॉल्स, तो इसका इम्पैक्ट आपको मैं बता देता हूँ जो मेरे जहन में है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के सारे का बेड़ा गर्क कर देंगे। बिल्कुल। और नंबर 3 सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पे होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर बैठ के फिर अमेरिका इस सारे खित्ते में अपनी शैतानियत फैलाएगा वहां पर। ये स्पेशली बलूचिस्तान में, वो तो आप पहले बलूचिस्तान को हिट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में डेफिनेटली, बलूचिस्तान तो ऑलरेडी वो लोग फैला रहे हैं, बलूचिस्तान में डेफिनेटली फैलाएंगे, पाकिस्तान में फैलाएंगे। और रशिया की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखिए, नक्शा आप देखते हैं तो चाइना, रशिया का और ईरान का फासला कितना है आपस में? चाइना का नहीं, रशिया और ईरान का मैं कह रहा हूँ। नहीं, आई हैव नो आइडिया सर, मेरा ख्याल कहता है ये कि ईरान को, आप नक्शा देखें, नेक्स्ट है, अंडर बेली है ये बिल्कुल रशिया का। तो रशिया को समझ है इस चीज की, रशियन समझते हैं इस चीज को। और मैं ये भी आपको बता दूं, मैं इतरात, ये मैं कोई कंफर्म मेरी किसी खबर नहीं थी, लेकिन मेरी रीडिंग है सिचुएशन को ये है कि रशिया ने ऑलरेडी ईरान को टेक्नोलॉजी फराहम की है, कुछ वेपन सिस्टम्स की, कुछ वेपन सिस्टम फराहम किए हैं, जिसकी वजह से ईरान इस वक्त थोड़ा मजबूत खड़ा नजर आ रहा है आपको। हाँ, नहीं, अभी डॉक्टर एंड्रू जी यही बात कर रहे थे ना कि हम टेक्निकल असिस्टेंस दे सकते हैं इसके, एयर डिफेंस और ये चीज, और एयर डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी दिया हुआ उन्होंने, काफी कुछ दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं आपको। हाँ जी, तो इसलिए ये इंटरेस्ट में है, रशिया के इंटरेस्ट में है। जिस तरह रशिया को यूक्रेन में फंसाने की कोशिश की गई है, अब रशिया के पास, चीन के पास मौका है कि रूस को और अमेरिका को और इजराइल को अब पकड़ लें यहाँ पर, और सारे ये करें। आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, एक ईरान की मदद करें कि इनका बहरी बेड़ा का एक बड़ा जहाज डुबो दें, जो तैयार बरदार जहाज है, मामलात काफी हद तक दिखेंगे, दुनिया की सीध होने शुरू हो जाएंगे। सर, अगर बेड़ा डुबो देते हैं इसका, यानी कि उसको, तो क्या फिर थर्ड वर्ल्ड वार नहीं शुरू हो जाएगी, तीसरी आलमी जंग? अमेरिका का आप क्या ख्याल है, अफोर्ड कर सकता है? यूरोप अफोर्ड कर सकता है? सर, अफोर्ड का तो मसला नहीं, वो तो डिस्ट्रक्शन चाहते हैं। भाई, डिस्ट्रक्शन वो ईरान की चाहते हैं ना, डिस्ट्रक्शन पाकिस्तान की चाहते हैं, वो अपने डिस्ट्रक्शन तो नहीं चाहते ना। क्योंकि एब्सटेंट फाइल के तो अंदर तो सब काम कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि उनकी तो कोशिश ये है कि जंग जो है ये मशरिक में लड़ी जाए, मशरिक के लोग इसका शिकार हों, उसका फायदा वो लोग उठाएं। तो हम ये जंग की तरफ क्यों नहीं ले जा सकते? सर, इससे पहले कि हम इस बात के दूसरी तरफ जाएं, जो हमारे आर्मी चीफ थे, जो अभी फील्ड मार्शल है,
जब ये यूएस से गए थे तो उन्होंने बड़ी एक अहम स्टेटमेंट दी थी कि अगर पाकिस्तान, हमने देखा कि पाकिस्तान जा रहा तो हम आधी दुनिया को लेके साथ जाएंगे, तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट होगा या कैलकुलेटेड मूव था पाकिस्तान की तरफ से? ऑब्वियसली आपको पुतिन की बात याद नहीं कि उसने कहा कि मुझे वो दुनिया, तो मुझे उस दुनिया का क्या फायदा है जिसमें रशिया नहीं है। हाँ, पुतिन ने तो यही कहा था, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो। दुनिया का क्या फायदा है जिसमें पाकिस्तान एक गैरतमंद और बहादुर कौम की तरह एक सर उठा के नहीं खड़ा हो। इसका मतलब है कि हमारे फील्ड मार्शल ने वो जो बात कही थी वो प्रीएम्प्टिव थी। नाउ गोइंग बैक टू द डॉक्टर एंड्रयू, इफ वी लुक एट Pakistan, Russia is a member of SCO, China is a member of SCO, Pakistan is a member of SCO, Iran is a member of SCO. How these SCO countries, because there are very deep cooperation among all the SCO countries, and they are different classes, although no binding, but there are different ways where they are talking about we have to enhance the cooperation. How from SCO, Pakistan, Russia and China can help Iran? Well, first of all, I think that the diversity of the SCO membership is not a liability, but rather an asset, because it reflects the diversity of the emerging world. The world will be very diverse in terms of political systems, in terms of economic structures, in terms of cultures. And we have to live in this very diverse world without fighting each other. So in this sense, SCO might be regarded as an important not even a regional, but rather a global hub or a global lab to test various options for different countries working with each other on common issues. I'm sure that the current developments in Iran will not go unnoticed by SCO, and that the members of this institution will get together to discuss how they can help one of its members. And this assistance might involve some economic help from the part of SCO members, but also political and diplomatic help, what Iran needs. For instance, just recently, Iran has concluded a free trade agreement not only with Russia, but with the members of the Eurasian Economic Union. And this agreement allows increasing the scale of trade, opens Eurasian markets to the Islamic Republic. I think that things like that will go on because whatever we but again here, so for to check this trade or northwest corridor, so there is a problem in Afghanistan. Afghanistan is acting as a stumbling block for all this regional cooperation. Absolutely, I agree. I think that if Afghanistan is not engaged, I think all our multilateral integration projects will experience very serious problems. Because but there is a point. Really I just want to know your comment on that. Taliban, they are not legitimate government. They have come to the power through the force. There are other people and other groups like Tajik, Hazara, and they are saying we don't obey them, we don't recognize them. They are not our representatives because they are the 58%, the Hazara, Tajik and other nationalities. Should the country start to work, also look for alternatives for engagements? Well, first of all, I agree with you. I think that the leadership in Afghanistan is not fully representative. And major ethnic groups, and not only ethnic groups, but political forces are excluded from the government, which of course raises questions about the stability of the current political arrangement in Afghanistan. But I think that, in order to handle this issue, all neighboring countries should work in coordination with each other. We should have our common list of, should I say, demands or at least requests to the Afghan leadership. We should reward them if they become more inclusive, if they are engaged in more representative arrangements there, if they do not go to some medieval practices in terms, for example, of how they approach gender issues or women education, civil society issues.
Yeah, there are many issues, but I think the trick is not to do it only on the bilateral basis, because then the Kabul can exploit disagreements between neighboring countries. Okay, we have to go towards the conclusion now. So I just I will turn back for a very short comment from General Mustafa. Sir, यही बात जो मैं बात कह रहा था कि HCO की बात, और दूसरा जो अफगानिस्तान पे जो बात हुई है, जो कि अभी एंड्रू साहब फरमा रहे हैं कि हमें कोई कॉमन लिस्ट बनानी चाहिए, आप क्या सर इस पर क्या समझें, पाकिस्तान को किस तरह की ये लिस्ट हो और पाकिस्तान को कैसे इसको परसू करना चाहिए? देखिए, मैं डे वन से ये बात कर रहा हूँ, जब से ये अफगानिस्तान का मुस्लिम ने सर उठाया है, कि पाकिस्तान को रीजनल अप्रोच अपनानी चाहिए, जिसमें जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक हैं सारे, ये मिलकर बैठ जाएं और ये मिलकर बैठ के फैसला कर लें कि हमने अफगानिस्तान से क्या करना है, कैसे डील करना है, अफगानिस्तान के लिए क्या करना है। और ये अगर मिलकर अफगानिस्तान से बात करें, तालिबान से बात करें, तो इनमें कैपेसिटी भी है और इनके पास रिसोर्सेज भी हैं। और फिर अब देखिए, ये मुल्क वो हैं जो अफगानिस्तान को चोक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर मिल जाएं तो फिर जो अमेरिका की शैतानियत है उसको निकाला जा सकता है। और दूसरी बात सर, तालिबान तो लेजिटिमेट भी नहीं है, वो ने ताकत से किया ना, कल को और ग्रुप कर लेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये सब मिल जाते हैं तो फिर बाकी जो इतने ग्रुप्स हैं उनको भी आवाज मिल जाएगी, फिर तालिबान को बात सुननी पड़ेगी, फिर तालिबान को पता चलेगा कि अमेरिका के डॉलर आ रहे हैं, उनको रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा से बात कर रहा हूँ कि मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्यों नहीं हम रीजनल अप्रोच अपना रहे, क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया फिर रहे हैं, क्यों इन मुल्कों में जाके, अब रशिया गए हैं, चीन के साथ ताल्लुकात हमारे बड़े अच्छे हैं, ताजिकिस्तान के साथ हम समझते हैं क्या मसला है, ईरानी वजीर खारजा ने देखिए इस मामले में खत लिखा है सऊदी रियासत को कि भाई अमन कराएं दोनों में, तो ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो एक दो मुल्क और इनको साथ कदम बिठा के अगर आप मिलके बैठ के बात करें तो आप अफगानिस्तान का हल निकालना को इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हल निकल, आप कहते हैं कि हल निकल सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि तमाम ममालिक के साथ आप बैठे। थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड्रू कताना फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, अब हम देखेंगे ग्लोबल खिते की हम सिचुएशन को देखते हैं, यहाँ हमारे उस कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो विज़िट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये शो करता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है और पाकिस्तान वो करता है कि जो वो उसके बेनिफिट में है। एक तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम सिक्योरिटी पे बात कर रहे थे कि रीजनल कंट्रीज़ अगर मिल के तालिबान को पुश करते हैं कि भाई साहब टेबल पे आओ, अदरवाइज़ इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसा अभी जनरल साहब फरमा रहे थे, ये तमाम जो रीजनल कंट्रीज़ हैं मिलकर उसको चोक भी कर सकते हैं, उसको इकनॉमिकली किस तरह भी। तो ये सारी सिचुएशन को देखें तो देखते रहिएगा इस विज़िट को कि पाकिस्तान के वहाँ क्या डिस्कशन हो रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक 90 जो कि बिज़नेस कम्युनिटी है, 90 बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी जा रहे हैं, वो भी इसको एक्सप्लोर करेंगे, इकोनॉमिक लिंकेजेस को, एजुकेशन पे बात होगी। तो देखते रहिए, वॉच आवर प्रोग्राम नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।